So I see कौन है? Charul Kumaut. Yes, sir. तो why don't you sit close by Charul? Otherwise तुमको बार बार इधर आना पड़ेगा, जाना पड़ेगा. क्या हुआ सर? You can sit close by to this control system. अगर कुछ भी चेंज करना है, नहीं तो तुमको वापस वहां से उठना पड़ेगा every time. Okay, sir. Got it. And Nidhini is there. Good morning. Good morning, sir. Why are you doing this online? So actually, I wasn't able to travel today. I stay in Panvel. Okay. And आपको पता था ये मेरा सेशन है आज? Yeah, I checked the website. ठीक है. And Tithi, good morning. This is your first session with me, and rather this is your first session with Universal Tutorials SAT program. Yeah. Okay. So what I've done is I'm centrally on your screen right now, and I'll control the screen. Charul, in case volume बढ़ाना है, कम करना है, या कुछ और तुम लोगों को adjustment करना है तो वो करना. I guess we are waiting for some more students. So Tithi, this is one session which is happening online, but largely most of your sessions will happen of English and mathematics will happen on offline. कुछ एक selected sessions, if I am not there at branch, then I take few sessions online, but I guess 80-85% sessions will happen offline from classroom. Okay, Tithi? The difference between you and students who are present today is that these are the students who have registered for March SAT, and you have enrolled for a program where you will be writing May 23 SAT. So aapka course, Tithi, will end by May, and before your SAT date, of course. And these guys, they will finish their course before the March attempt of SAT. And March happens to be the first month or first time ever when SAT will happen. How will SAT happen? Digitally. So March में पहले बार ऐसा होगा that it will happen digitally, and May will be, of course, second time. So after the class, Tithi, you will have to wait for 15 minutes, and then I will do a one-on-one talk with you about the program. We had earlier planned it at 11 a.m., but Surjit informed me that you got late or something. Yeah. So this talk where we give you an orientation about the program will happen after the class. So I think we are good to go now, and we can go for our session today. And you have a couple of books with you, Tithi, which is maths book and an English book. Okay? Now, this is a maths class, and I will pick from a new concept which is different from or not so much related from what you would have done previously. So I will pick from there. How our maths course is done. So अभी मैं सब तिथि को उसका stress ease out करने के लिए और उसको comfortable करने के लिए बातें कर रहा हूँ. तुम दोनों को तो सब पता है. So how this happens, Tithi, that in our maths, you will see there are 15 modules which caters to largely, broadly 15 skills of mathematics which are required for SAT exam. आज हम लोग जो करने वाले हैं वो मॉड्यूल 2 है, सेक्शन 2 है, चैप्टर 2 है, एंड दिस इज वन स्किल जो आपने अगर चैप्टर 1 भी मिस किया है, आपने मिस नहीं किया क्योंकि आपका कोर्स आज से ही चालू हो रहा है. सो इट विल गो इन राउंड फैशन. वी विल गो फ्रॉम 2 to 15 एंड बैक टू 1 फॉर यू. ठीक है. Whereas निधिनी एंड चारुल, ये लोगों ने तो मुझे ऐसा याद आता है 8th या 9th में कहीं से चालू किया था एंड 15 तक गए. अब 1 से लेके ये 7 तक आपके साथ रहेंगे, उसके बाद आपका अलग चलेगा और ये लोग का अलग चलेगा. That is about maths. As far as English is concerned, now this is to all 3 girls here. तो बहुत ध्यान से सुनना मुझे. You guys will be writing SAT digitally. कल जो SAT हुआ था, कल एक SAT हुआ दिसंबर अटेम्प्ट का, पता है क्या आप लोगों को? Yes. ठीक है. That was the last time it happened paper based. बच्चों ने दिया, मेरी बहुत सारे बच्चों से बात हुई and they have done really well. But when it will happen digitally,
There is one big change, Nidhini, Charul, Tithi, that you will see from your predecessors. And that change is largely in reading section. रीडिंग सेक्शन में बहुत बड़ा चेंज है. मैथ्स में कोई सिलेबस में चेंज नहीं है, क्वेश्चन पूछने में चेंज नहीं है, छोटा सा चेंज है ग्रिडिन में. ग्रिडिन में पहले 4 कॉलम्स होते थे, निधिनी एंड चारुल, ग्रिड के 4 कॉलम्स होते थे जिसमें आप आंसर लिखते थे. मैथ्स में अब वो 5 हो जाएंगे. आपको स्क्रीन पे 5 कैरेक्टर्स तक का आप आंसर निकाल सकते हो और लिख सकते हो. प्लस नेगेटिव साइन का एक अलग से सिंबल आएगा, नेगेटिव आंसर भी हो सकता है ग्रिडिन में, पहले ऐसा नहीं होता था. तिथि डोंट हैव टू वरी बिकॉज वो तो मैं पूरा ओरिएंट करूंगा आपको. As far as reading is concerned, there is a big change. But the good news is that reading का पहला session for all 3 is happening on 10th December Saturday. 10th December Saturday को आपका पहला reading का session है, because your reading starts from there. And for Tithi also it is first session, for you also it is first session. So English Tithi happens on Saturdays, Maths will happen on Sundays. English का पहला session होगा coming Saturday 10th December, and we will start with reading section. For Nidhini and Charul also, I think it is first reading first session, right? आप लोगों का वो सब तो भी चालू ही नहीं हुआ था. Yes, sir. So it will happen, and reading is major change. Writing and language no change. Maths grid in में change है. So when I meet you this Saturday, I'll be there in class. So I'll be taking a reading section. So I'll be there in class, and it will be taken by me and Anubhav sir. So we will take you through your reading skills. वो वाला पूरा हम लोग कवर करेंगे. ये 10th December को मैं आपसे फिजिकली क्लास में मिलूंगा. So Miss Kothari, if possible, तुम आ सकती होगी तो क्लास में आ जाना, ज्यादा अच्छा रहेगा. Yeah, I'll be there. तो अब चालू करते हैं. Let's start this session now. This session is about very interesting concept, and if I have to tell you about the weightage, let me tell you, ये जो chapters हैं जो अभी हम करेंगे, especially chapter 1, 2 and 3, they have highest weightage on SAT chapter, and especially what we are going to do right now. SAT books अगर आप कोई official guide या SAT के website पे जाके, college board के website पे जाके math का syllabus देखोगे, so they call it हार्ट ऑफ एल्जेब्रा. वो लोग इसको बोलते हैं हार्ट ऑफ एल्जेब्रा. हमारे यहाँ हमने कभी नहीं पढ़ा ऐसा कोई टॉपिक, ये क्या होता है हार्ट ऑफ एल्जेब्रा. एल्जेब्रा पता है. तो हार्ट ऑफ एल्जेब्रा इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू डू टुडे, एंड इन दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लीनियर रिलेशनशिप्स, लीनियर इक्वेशंस एंड सॉल्यूशन टू लीनियर इक्वेशंस एंड लीनियर रिलेशनशिप्स. ओके गाइस, सो चारुल कुमावत. अच्छा, पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए, बिकॉज आई नो अबाउट चारुल, व्हाट शी इज डूइंग, आई नो अबाउट निधिनी. सो तिथि, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. सो वी नो योर नेम, सो गिव योर फुल नेम, गिव योर करंट academic status, tell us, replace करता हूँ, tell us which class you are in and what subjects you have, which school you come from. Okay, go ahead. So hi, I'm Tithi Singh. I'm in DPS Naval. I'm in 11th grade, taking PCM as my main subject. I have CS as my optional backup subject. And right now, I just got done with my half yearlies. We haven't received the grades yet, so we're not Yes. marks. Okay. So yeah. Okay. Fine. Good. So Charul and Nidhini, you guys are both commerce students, right? No. I'm commerce. Charul is from commerce stream with economics, accountancy and BS, and Nidhini is from science stream. Yeah, from Synergy Academy. I've taken PCB. इंटीग्रेटेड वाले प्रोग्राम में हो आप, और आप सिनर्जी एकेडमी में पढ़ रहे हो PCB लेके. एंड चारुल इज फ्रॉम बाल भारती. DAV. Okay, DAV Kharghar. Chalo. So that was about introduction. I go to my whiteboard now, and ये सब आपको दिखता रहेगा. Just tell me if this is okay. Is it visible properly?
Yeah. Hello. Stop. Hello. Are you guys there? Yes, sir. Okay. So let me go to gallery view and yes. So we come down to an interesting concept of linear relationship. So मुझे कोई भी define करो, साइंस के दो बच्चे हैं और एक कॉमर्स की है. How would you define linear relationship or let's say linear function? How would you define that? Or linear function या linear equation कैसे define करोगे? Can you define it for me, anyone? And there's nothing called as right and wrong. Whatever your response be, I'll try and build over it. चलो. So book की जरूरत नहीं है. Book close करके बैठो. Miss Kumawat and Tithi Singh. Yes. Go ahead. How would you define linear? कुछ भी define करो. Linear equation define करना है. Linear function define करना है. Linear relationship define करना है. आपको जो आता हो, please define that for me. Yes, guys. Anyone? I'm not really sure about this, but a linear equation is an equation where you have to prove that all LHS is equal to RH. That's so. वो तो quadratic equation में भी करना पड़ता है ना, निधि? LHS equal to RHS, y is equal to ax square plus But bx. linear equation, we only have to find value for x, like only one variable is. Find value of x, which will give you some value of y. Linear equation maybe there's a relationship between x and y. Quadratic equation maybe there's an equation between x and y. My question to you is, what kind of relationship is called linear relationship? So relationship है मतलब एक से ज्यादा quantity है, right guys? So there are two quantities, x and y. X and y दो quantity है. मेरा सवाल क्या है? My question is, what kind of relationship between x and y will you call linear? What should happen in that relationship so that you can call it linear? Kharga room 44. So Nidhini, thank you for that try, but let's see, can we improve Nidhini's answer? Sharul, क्या हो गया? हाँ कुछ आ रहा है ना, मैं सोच रही हूँ. हाँ कुछ आ रहा है. Okay. तो ये कुछ को जल्दी लेके आओ क्योंकि it will eat lot of time otherwise. ये ना 7th 8th में पढ़ा होगा. अच्छा चलो, let me give you a hint guys. Let me give you a छोटा सा hint. Rather, hint is in form of a question. What happens when you plot a linear equation on a graph paper? वो ग्राफ के पेपर को वो किया होगा ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, ग्राफिकल मेथड. Come again. So when we plot the graphs and values connect x and y for the x and y values. हाँ. So क्या दिखता है ग्राफ पेपर पे जब आप एक लीनियर इक्वेशन को उस पे प्लॉट करते हो? So is it sometimes that it's a straight line graph? Absolutely right. This is what I was looking for. So if I have a coordinate plane, because I am talking about relationship, because I am talking about function or an equation, there are two variables. One is x and the other is y. The horizontal axis is x-axis, the vertical axis is y-axis. If I plot the relationship, if that relationship is linear, I will for sure get a straight line. हमेशा straight line मिलेगी. So Nidhini, if this would have been a quadratic equation between x and y, I will not get a straight line. I will get a parabola. मुझे पैराबोला मिलेगा. तो अभी तो हम वो नहीं पढ़ रहे हैं, पैराबोला नहीं पढ़ रहे हैं, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं पढ़ रहे हैं. So guys, linear equation or linear relationship is a relationship between two variables such that when plotted on a xy Cartesian plane, you get a straight line.
चारुल कुमावत, ये समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है. My next question. And Charul, you have mathematics with you in 11th 12th में लिया है तुमने maths? No, I took CS. Yes, sir. ठीक है. And CS was तो ठीक है, वो PCM वाले और PCB वालों में I think निधिनी के पास maths नहीं है 11th 12th में, right निधिनी? Yeah, I dropped maths. Yeah, so don't worry, it's not required for SAT, don't worry. तो guys, अगर ये straight line मिलेगा, तिथि, what is the equation for straight line? How do you represent a straight line equation form में? Any idea? So it's technically like if X is growing, Y would also have a different value that's going to be growing. So like both of them are like dependent upon each other, like proportional to each other kind of thing. Now, ये सुनने में अच्छा लग रहा है, but ऐसा नहीं है. बेटे, what happens is, if you know they are not dependent on each other, rather the correct way would be X is an independent variable, and Y is a dependent variable, dependent on what? X grows, Y would grow as well. Yes. So something like, अगर इसको practical world में देखोगे, जो आप economics में पढ़ते हो चारुल, you know how it happens is price or let's say price of oil, and this could be demand for oil, petrol, let's say crude oil, demand for oil. So if I increase the price, the demand will go down. ये negative relationship है. But आपको एक straight line, ये भी एक straight line ही होगा, you know, going down or going up. So price of oil is an independent variable, demand for oil is a dependent variable. तो वो y बन जाएगा. The convention says y को dependent बनाना है, x independent होगा, value of y will depend on value of x. अगर लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म आप लोगों को याद होगा तो इट इज ax plus by plus c equal to 0, where x and y are variables, a, b, c are coefficient, c is a constant. Rather, c is not a coefficient, a and b are coefficient, c is a constant. है ना, ये लीनियर इक्वेशन है. मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर ये स्ट्रेट लाइन बनता है तो स्ट्रेट लाइन की एक इक्वेशन होती है by which you can generate a straight line. क्या वो इक्वेशन याद है किसी को? ये 11th के स्ट्रेट लाइन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के उसमें कभी पढ़ा होगा. चलो मैं एक इक्वेशन लिखता हूं यहाँ पे और बताओ if this looks familiar to you guys. Let me write down something. MX plus C. हाँ, किसने बोला ये क्या familiar लगता है? Y is equal to mx plus c. MX plus C. M is the slope and C is the constant. I don't know. Okay. So Nidhini, is this something that you know? Yeah, I learned this in 10th, but I forgot. Okay. Charul, what about you? Charul, bolo. So I answered that in 10th, but forgot. C. ठीक है. So this is the equation जो कि इसी equation से आता है basically, which says y is equal to mx plus c. So Tithi, question to you, what does c signify, or what is the meaning of c in this equation? Yes, Tithi. So it's usually like the distance between the intercepts or something. I don't remember what you call C. It's What is the interpretation? So ये equation याद है आपको, y is equal to mx plus c? yes. Listen. Okay. So what is the interpretation of c? Anyone? What does c represent? Go ahead, Nidhini. Constant C. Yeah, it is a constant, agreed. But what I am asking is significance, meaning, interpretation of c. तो चलो ये मैं बताता हूँ. So interpretation of c is, guys, c means, and चारुल ये तुमने ना इकोनॉमिक्स में पढ़ा है. C means, like Nidhini said, it is a constant, but it is called, oh I'm so sorry, I think spotlight मेरा बोर्ड नहीं है, spotlight खारगर वाले हैं. C is called as y-intercept. तो guys ये जो पॉइंट है ना, वो स्ट्रेट लाइन
वाई एक्सिस को कहां पे कट कर रही है वो वैल्यू होता है सी का। ये देखो, ये जो दोनों मैंने बनाया ना, ये एरो ग्रीन वाले, ये दोनों सी है। ये वाले लाइन के लिए ये मेरा लाइन L1 है, ये मेरा लाइन L2 है। फॉर L1 दिस इज सी, फॉर L2 दिस इज सी। So C is y-intercept. It is also called as initial value. It is also called as sunk cost. It is also called as value of y when x is equal to 0. देख लो, इस पॉइंट पे x 0 होगा, ये मेरा स्टार्टिंग वैल्यू है, ये मेरा y इंटरसेप्ट है, इनिशियल वैल्यू है। तो जब हम उबर में ट्रैवल करते हैं, उबर बोलता है आपका टोटल फेयर विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ किलोमीटर्स ट्रैवल्ड इनटू 15 रुपीज प्लस 50 रुपीज विच इज द बुकिंग चार्ज। नो मैटर हाउ मच यू ट्रैवल, उबर बुक कर दिया, अब अगर आप ट्रैवल नहीं करोगे, कैंसिल कर दोगे, 5 मिनट बाद 50 रुपए तो लग जाएंगे। इनिशियल वैल्यू, स्टार्टिंग वैल्यू। बोलो, समझ में आ रहा है? Yes, sir. y इंटरसेप्ट, तो c का मतलब होता है y इंटरसेप्ट, मेरा लाइन y एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है, वो वैल्यू विल बी वैल्यू ऑफ c। तिथि? Yes, sir. ओके, सो ये संक कॉस्ट जैसा कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा ना चारों इकोनॉमिक्स में। Yes. मैंने, लेट्स से गाइस, आई वांट टू ओपन अ बेकरी, आई वांट टू ओपन अ बेकरी। तो वो बेकरी में जो मैंने ओवन खरीदा उसका जो कॉस्ट होगा, नो मैटर हाउ मेनी ब्रेड्स आई बेक, नो मैटर इफ आई बेक एनी ब्रेड और नॉट, वो पैसा लग गया तो लग गया। तो मेरे बिजनेस का वो स्टार्टिंग कॉस्ट है, वो पैसा चेंज नहीं होने वाला। हाँ, मैंने यूज नहीं किया तो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट नहीं लगेगा, यूज नहीं किया तो शायद आई डोंट हैव टू बाय अ मैदा और बटर और थिंग्स लाइक दैट, इंग्रेडिएंट्स, रॉ मटेरियल, बट cost of that oven becomes starting cost, initial cost, sunk cost, starting value. उबर में बिना ट्रैवल किए 50 रुपए का जो इनिशियल खर्चा आता है, that is your fixed cost. So this is also fixed cost. Got it, guys? Straight line में इसको बोलते हैं y intercept. Line intersecting y axis at that point, वो जो point है उसका जो value है, that is called as c. अब मुझे एक बात बताओ, कैन सी बी जीरो? No. कैन सी बी जीरो? No. हाँ, नो, ओके, कोई तो यस बोलो। तिथि, व्हाट डू यू से? If C is 0, wouldn't it be like that X is 0, Y is 0? तो चलो ये ना मैं पूछता हूँ फिर आप लोगों से। यस, सी कैन बी जीरो। व्हेन विल सी बी जीरो? सी जीरो हो सकता है, तो अब मैं क्या करता हूँ? हाँ बोलो, बोलो नहीं दीदी। Maybe when y is 0, c will also be 0. हाँ, तो बताइए मैडम, वाई कब जीरो होता है? व्हेन विल वाई बी जीरो गाइस? डोंट टेल मी व्हेन सी इज जीरो। C is nothing but the value of y when x is 0. So if we're saying that C is 0, then y would also be equal to 0. And wouldn't it be at origin then? Very good. When I say C is 0, it means that line, देखो ये मेरी लाइन है, ये जो लाइन है x एक्सिस पे थ्रू आउट y 0 है, ठीक है? तो अगर ये लाइन, मैं कुछ और कलर लेता हूँ, let me see if I have a different color. I use some other color. I'll use this color. So look at this line guys, and I call it L3. इसका y इंटरसेप्ट देखो कहां पे है, ओरिजिन पे है कि नहीं? तो जब भी अगर किसी फंक्शन में if c is 0, for sure you can tell me that line is passing through Charul, passing through origin. अगर c 0 है तो कोई फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है, लाइन ओरिजिन से पास हो रही है। गुड तिथि, क्योंकि भाई अगर c 0 है तो y 0 है और x तो पहले ही 0 था c के लिए, तो इसका मतलब लाइन इज पासिंग ओरिजिन।
What if C is positive? What can you tell me if C is positive? अगर C पॉजिटिव है तो लाइन y एक्सिस को ओरिजिन के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है. अगर C नेगेटिव है तो लाइन y एक्सिस को ओरिजिन के नीचे इंटरसेक्ट कर रही है. बोलो, ये सब समझ में आ गया? Yes. This is all about C that I wanted to share with you guys. आगे बढ़ सकते हैं क्या? Just let me know if this you have followed. I will go to next concept. Can I go ahead? Yes. X मैंने आप लोगों को अभी बताया. X is independent variable. Independent variable. अब इसमें if you look into my Uber example, guys, ये number of kilometer traveled is an independent variable, and total fare, which is y, is a dependent variable. तो x है independent variable, y है dependent variable. तो total fare Uber का dependent, x number of kilometers traveled मेरे equation में देखो is an independent variable. अब सबसे important thing, ये example याद रखना, f is equal to k times number of kilometers into 15 rupees plus 50 rupees. अब मैं अगर आपसे ये पूछूं, मेरे स्टैंडर्ड इक्वेशन में सिर्फ एक ही चीज बच गया है जो हम लोगों ने अभी तक नहीं किया है, which is this. हाँ, चलो मेरे पूछने से पहले कुछ आंसर आया है. What is the interpretation for M? So I got one answer from the class, and Tithi said this is slope. Anything else? ये m क्या है? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है स्ट्रेट लाइन का. मैं खुद को स्पॉटलाइट पे लाता हूं. ये जो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हमने देखा, उसमें जो m है ये स्टैंडर्ड फॉर्म था, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी स्ट्रेट लाइन के लिए. इसको लीनियर इक्वेशन भी बोल सकते हैं, लीनियर फंक्शन भी बोल सकते हैं. इसमें m स्लोप है. एनी अदर आइडिया और क्या हो सकता है? ये व्हाट एल्स? स्लोप इज नॉट. अच्छा चलो, what do you mean by slope? I remember the value, the formula. भी आएगा, मतलब देखो अभी समझ में आएगा. मैं आई गो बैक टू उबर का एग्जाम्पल गाइज. अगर ये उबर का मैं आपको इक्वेशन दिखाता हूं वापस, कैन यू टेल मी वैल्यू ऑफ m? 15. निधिनी, चारुल, करेक्ट? 15. क्योंकि ये वाले इक्वेशन को चारुल कंपेयर करो इस इक्वेशन से. तो जब आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो y की जगह आपने f लिखा है. In place of x you have written k, in place of c you have written 50, and in place of m you have written 15. तो m is slope of the line, जैसा तिथि सिंह ने बोला, तो उसका वैल्यू 15 है. अब मैं आपसे ये पूछता हूं, मान लो मैं एक प्लॉट बनाता हूं यहाँ पे, ग्राफ प्लॉट, लैंड प्लॉट नहीं, ग्राफ प्लॉट बनाते हैं कि कितना किलोमीटर ट्रैवल करेंगे तो कितना फेयर आएगा. एंड आई ओनली वांट चारुल टू स्टार्ट दिस. चारुल, लेट्स से इफ आई डोंट ट्रैवल एट ऑल, इफ k is 0, व्हाट इज द टोटल फेयर? 50 rupees. If I travel 1 kilometer, what is the total fare? 65. Nidhini, you go next. K2. What is value of total fare, Nidhini? K2. Anyu? 80. What about 3? 3 kilometers travel. Total fare कितना होगा? 95. And if I travel 4 kilometers, total fare बोलो निधिनी? 110. Hold on, very good. Now I come to you, Tithi. Yes, sir. Is there a fixed difference? There's a difference of 10 everywhere. 10? Don't break my heart.
And what is the difference here? 1. So can I say for every 1 kilometer that I travel, my fare will increase by 15 rupees? Yeah. और ये 15 आपने मुझे अभी बोला कि ये 15 कुछ नहीं है सर, m है. And m stands for slope. So can we also call m as the linear function of the line of the equation? Come again. I'm not sure about this, but can we call m as the linear function of the equation? M is, so I'll rephrase what you're saying. Can we call m as linear function of this equation? Yeah. No. M is not linear function. M is slope, और मैं आपको बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि slope क्या है. तो अगर सीधी सी भाषा में simple language में मैं समझूं, तो slope is nothing but rate of change. If I increase x by a fixed small unit quantity, once मैं increase करता हूँ, what is the change? It could be positive or negative, but what is the change in y? If I change x by 1 unit, what is change in y is given by this slope m. तो slope का मतलब होता है rate of change. Titi Singh, do you agree? Yes, sir. इसको थोड़ा सा टेक्निकली समझते हैं गाइस. सो m is called as slope. आप देखेंगे in some literature it is also called as gradient of line. इसको gradient भी बोलते हैं किसी बुक में. This is also called as tan theta of a line. Do you know this, Tithi? Yes, sir. अब ये tan theta क्यों? So tan theta का Perpendicular upon base. वेरी गुड. tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. अब इसको याद रखना. लेट्स से ये मेरा कोऑर्डिनेट प्लेन है और ये मैं ना पेन यूज कर, ये मेरी लाइन है. आई टेक 2 पॉइंट्स ऑन दिस लाइन. लेट्स से लाइन पॉइंट ए, पॉइंट बी. जहां समझ में नहीं आए मुझे रोकना. सो पॉइंट ए, पॉइंट बी. ये पॉइंट ए का x1 कोऑर्डिनेट है, ये पॉइंट बी का x2, या इसको x1 ले लो, ये इसका x2 कोऑर्डिनेट है. ये पॉइंट बी का y कोऑर्डिनेट है, ये वाला पॉइंट ए का y2 कोऑर्डिनेट है. ये लाइन देख लो बस एक बार. ओके गाइस, लेट मी ड्रॉ अ राइट ट्राइंगल. एक छोटा सा राइट ट्राइंगल बनाने की कोशिश करता हूं. ये ऐसा, ये ऐसा, ये एक राइट ट्राइंगल बनाया. इस पॉइंट को सी ले लेते हैं. अब अगर मुझे ये एंगल थीटा मानता हूं मैं, लेट्स से दिस एंगल इज थीटा. सो tan थीटा अभी आपने बोला will be perpendicular AC upon base BC. बोलिए. Yes, sir. अब AC को डिफाइन करते हैं. ये जो लेंथ है ना AC, आप ये देखेंगे दिस इज नथिंग बट y2 minus y1. y2 minus y1 upon x2 minus x1. यस. और जो BC है, चारों जहां समझ में नहीं आए मुझसे पूछना. x2 minus x1 करूंगा मैं तो BC आ जाएगा. बोलो. अब ये अगर ध्यान से देखोगे आप तो ये वही तो है रेट ऑफ चेंज. x को अगर 1 यूनिट से बढ़ाया तो y कितना बढ़ेगा? फॉर एवरी 1 यूनिट चेंज इन x, व्हाट इज चेंज इन y? गाइस, आर वी देयर और हैव आई लॉस्ट यू? Yes, sir. ये समझ में आया? Yes, sir. तो बेसिकली m का मतलब होता है व्हाट इज द चेंज इन y, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x. अब अगर ये डेल्टा वेल्टा समझ में नहीं आता है, कभी डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा है, तो घबराने का नहीं. डोंट वरी. बट ये याद रखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. ये लाइन पे कोई भी 2 पॉइंट लो, आप उससे स्लोप निकाल सकते हो. y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस अपॉन x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस. 15 रुपए फॉर एवरी 1 किलोमीटर दैट यू ट्रेवल. x2 माइनस x1. देखो मैं आता हूं वापस. x2 माइनस x1, ये रहा y2 माइनस y1 जो कि 15 आया था.
है कि नहीं? Yes, sir. Okay. So this is interpretation of M. Now, ये क्लियर हो गया ना? M का मतलब होता है स्लोप, ग्रेडियंट, tan थीटा, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, किसी भी नाम से बुलाओ. अच्छा, अमेरिकन बुक पढ़ोगे, so they call it rise over run. वर्टिकल डायरेक्शन में चेंज, राइज. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चेंज, रन. राइज ओवर रन. ठीक है? That's how Americans call it. And I think even Englishmen call it. तो अब देखते हैं, can M be positive? तो उसका क्या मतलब? Can M be negative? तो उसका क्या मतलब? And can M be zero? क्या सबसे पहले बताओ, M पॉजिटिव हो सकता है क्या? Yes, sir. ऑफ कोर्स हो सकता है. अभी इस एग्जांपल में देखा, M पॉजिटिव था. तो अगर M पॉजिटिव है गाइस, इसका मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ? X and Y दोनों पॉजिटिव. नहीं, not exactly. थोड़ा सा और रिफाइन करते हैं. So if M is positive, it means slope is positive. It means if I look into the graph from left to right, अगर मैं left से right में देखूंगा, the line would be going up. Positive slope. If you increase X, Y will increase. Nidhini, you are right partially. If you decrease X, Y will also decrease. Positive relationship. So can we say that if the slope is positive, then y2 and x2 are greater than x1 and y1? If slope is positive, then can I say y2 and x2 are greater than. I will not want to say that, but I can tell you one thing, Nidhini, इसको इस तरह से बोल सकती हो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का साइन सेम है. ऐसे बोलो, जो न्यूमरेटर का साइन है वही डिनोमिनेटर का साइन है, जो डिनोमिनेटर का साइन है वही न्यूमरेटर का साइन है. ऐसे समझो, दोनों का साइन सेम है, सच दैट आपको हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिलती है. न्यूमरेटर भी नेगेटिव है तो डिनोमिनेटर भी नेगेटिव है, दोनों माइनस कैंसिल हो जाते हैं, आपको पॉजिटिव स्लोप. So something like number of hours you put in for your SAT prep and your score for SAT prep. Positive relationship. More number of hours, Charul, more SAT score. है ना? Positive relationship है इसमें. बोलो, ये सब समझ में आ गया? Left to right ग्राफ ऊपर जाएगा. Similarly, अगर slope negative है तो इसका क्या मतलब है? Left to right, my graph will go down. M negative. नीचे की तरफ आ रहा होगा मेरा ग्राफ. If you increase X, Y will decrease. Inverse relationship है. If you decrease X, Y will increase. So जैसा इकोनॉमिक्स में होता है, increase the price, quantity demanded goes down. Decrease the price, quantity demanded goes up. ये नेगेटिव स्लोप वाली लाइन बनेगी. डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व पढ़ा है ना चारुल कुमावत आपने? So this is this. बोलिए, ये सब समझ में आ गया? अब ये क्वेश्चन आप लोगों से थोड़ा सोच के बताना है. Don't be in hurry. Can M be negative? And if yes, when is M negative? ये कौन सी लाइन होगी? कौन सा इक्वेशन होगा जिसमें M नेगेटिव है? तो आंसर इज yes, M can be negative. M नेगेटिव मतलब क्या? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 क्या है? नहीं, नेगेटिव नहीं, सॉरी. Can M be zero? I'm very sorry. Yeah, it can be zero. And it can be zero if the line is constant. Yes. When the line is horizontal, like from left to right, when the line is horizontal, then M can be zero. Very good. Tithi, do you agree? What she said? She said M zero है मतलब line is lying flat, it is horizontal or parallel to x-axis. Technically, yeah. Because like if you're saying that M is the ratio of rise over run, or agar rise and run both are zero, then M will also be zero. नहीं. If both are zero, then 0 upon 0 का क्या वैल्यू होता है guys? लोगों ने आज डिसाइड किया कि संडे को तुम लोग मुझे खूब सारे झटके देने वाले हो. 0 upon 0 is not 1. 0 upon 0 is not defined mathematically.
So Tithi Singh, when m is 0, the line will look like this. Oh, sorry, ये मुझे change करना है. At times I feel like radio jockey when I am teaching online. इसको spotlight करो, इसको spotlight करो, इसको छोटा करो, बड़ा करो. हाँ. तो ये ऐसा होगा अगर m 0 है तो भाई. The line, this is m equal to 0. The line will be parallel to x-axis. अगर आप इसमें देखोगे तो y2 और y1 चेंज ही नहीं हो रहा है, सेम y है थ्रू आउट, मगर x2 अपॉन x1 चेंज हो रहा है, x2 minus x1, and hence numerator becomes 0. Your y is not changing. Right. So if line is parallel to x-axis, guys, m will be 0. तो आप देखोगे इस लाइन का इक्वेशन विल बी y इक्वल टू c, क्योंकि m 0 हो गया, 0 into x is 0, तो y will be equal to c. चारों लिए क्लियर है क्या? Yes, sir. तिथि बोलो. Yes, sir. So if that is the case, Tithi, what will be equation of this line? When line is parallel to y-axis, parallel to x-axis तो देख लिया m 0 है. इसके स्लोप का क्या होगा भाई? अगर लाइन y-axis को parallel है तो? Would it be y2 minus y1 upon 0 then? Okay, मैं लिखता हूँ. तुमने आंसर नहीं दिया है, इंटरमीडिएट स्टेप बताया है, बट लेट मी राइट इट डाउन. हाँ, तो इसका क्या वैल्यू होगा? समथिंग अपॉन 0. That's something. Something upon 0 is what? The value, the delta y. Ah, right. Infinity. Something divided by 0 is again not defined, or infinity. So Yeah. slope of this line will be infinite. Okay, guys? Yeah. So this is how you understand. हमने एक छोटा सा concept लिया था, linear equation में quick revision कर रहा हूँ. Function, relationships, y is equal to mx plus c एक standard equation होता है, जिसमें c का मतलब होता है y intercept, initial, sunk cost, starting cost. ऊपर का example देखो. फिर हम x और y को हमने समझा independent, dependent variable. फिर हम m पे गए. m means slope of line, rate of change, gradient of line, tan theta of a line. This can be positive, negative or zero. उसका क्या मतलब होता है? C positive, negative, zero का क्या मतलब होता है? हमने ये सब देखा. So मेरा क्लास का स्ट्रक्चर ऐसा होता है तिथि, that we do some half an hour of theory and then we go and crack questions based on this theory. ये दोनों को तो पता है. This is what I have shared with you. I don't see other two students today. Caleb नहीं है और एक और लड़का नहीं है, I think Patil या कौन नहीं है. Anyway, so any questions you have on this? None. Now I move to the next thing. तो पहले बस ये theory का last part करते हैं और फिर हम लोग questions पे जाएंगे. So this was the concept we just did. It's called interpretation of linear equation. SAT में आपको इसके interpretation based questions आएंगे guys, और उनको manage करना है. The second concept that I want to do with you people is called as solution to pair of linear equation. तो ये CBSE के I think 9th में कहीं पे आता है ये part जो भी हम कर रहे हैं. So let's say I have two linear equations. One is a1x plus b1y equal to c1, और एक ऐसा मान लो एक दूसरा linear equation है a2x plus b2y equal to c2. Now when I say solution of pair of linear equation, I mean that value of x and y which satisfies both the equation simultaneously. Satisfy मतलब जो अभी आपने बोला था LHS equal to RHS हो जाए. When I substitute value of x and y into these two equations, it satisfies both the equation, same value, simultaneously. Then I will say I have a solution for this system of linear equation.
right? Yeah. Okay. Now, theory says that if I plot, let's say ये मेरा line 1 है L1 and इसको plot करूंगा तो मुझे line 2 मिलेगा, straight line ही मिलेगा क्योंकि ये linear equations है. Theory says that straight lines can maximum intersect at how many points? Straight lines can intersect maximum at how many points? 2 points. Very good. अब बनाओ दो straight line बनाओ निधिनी और मुझे दिखाओ कि वो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं. Make 2 straight lines and make them intersect at 2 points. Oh, 2 straight lines. No, I'm sorry, they don't intersect at any point. तुमको कभी एग्जाम Straight में lines are parallel. ऐसा कभी एक सिंबल मिला है क्या किसी आंसर के लिए? 2 स्ट्रेट लाइन आपस में क्रॉस हो रहे हैं, मिला है ना? ऐसा होता है ना? तो ये 2 स्ट्रेट लाइन है. हाउ मेनी इंटरसेक्शन पॉइंट्स? 1. या फिर ऐसा हो सकता है आई हैव फर्स्ट स्ट्रेट लाइन एंड आई हैव सेकंड स्ट्रेट लाइन एंड दे आर सुपर इम्पोज्ड ऑन ईच अदर. इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटरसेक्शंस है कि नहीं? या फिर ये पैरेलल हो सकती है, 2 स्ट्रेट लाइंस हैं वो पैरेलल हो सकती हैं. Parallel होगा तो they won't intersect at any point. Yes, yes. So only 3 cases are possible with 2 straight line guys. Either they will intersect at 1 point, or they will superimpose each other, or they are parallel. There is 0 intersection. बोलो ये है ना? तो अब मैं आता हूं इस पे. If I have 2 straight lines and if I have to find solution means that value of x and y which will satisfy both the equations simultaneously, then there are only 3 cases possible, and those 3 cases are, let me change the color of pen, and those 3 cases are one intersection ये. तो मैं सिर्फ coefficients को study करके बता सकता हूं that whether these lines will be parallel to each other, they will intersect or they will superimpose. तो कैसे पता कर सकते हैं? कोएफिशिएंट को स्टडी करो. रेशो लो x के कोएफिशिएंट का, रेशो लो y के कोएफिशिएंट्स का, and if these 2 ratios are not equal, then you can definitely say that you have a unique solution, which means lines will intersect at one and only one point. Lines will intersect at one and only one point. If A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2, then I don't have to look any further. I can say that the given pair of linear equations intersect at one and only one point. This phenomena is called unique solution. ये कभी पहले पढ़ा है? चारुल कुमावत, तिथि सिंह पढ़ा है क्या ये पहले कभी? ठीक है, अब आते हैं आगे. Let's look at no solution. No solution मतलब lines are parallel. Let's say this is my line 1 and let's say this is my line 2. They don't intersect. They are parallel. अगर ऐसा हो रहा है तो A1 upon A2 will be equal to B1 upon B2, but will not be equal to C1 upon C2. आपके कांस्टेंट्स के रेशो का ये रिलेशनशिप अगर होगा तो लाइंस पैरेलल होंगी. दिस इज कॉल्ड एज जीरो सॉल्यूशन. एसएटी में कोई एक क्वेश्चन कभी कभार इस पे डायरेक्ट आ सकता है. तो दिस इज कॉल्ड एज जीरो सॉल्यूशन, या कई जगह इसको ऐसा भी बोलते हैं नो सॉल्यूशन. ओके, लेट्स गो टू द थर्ड केस. Third case is, let's say this is my graph and I have ये थोड़ा सा आड़ा तिरछा बन गया, but that's okay. This is my line 1 and this is my line 2. They are superimposed. ये कब होगा? When A1 upon A2 ये ratio is equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2. अगर ऐसा होगा तो I'll have superimposed lines, or I'll say infinite solution. There are infinite number of points which satisfy both the equations
साइमल्टेनियसली फाइनाइट सॉल्यूशन। ये 3 केसेस आपको याद रखने हैं। याद रहेंगे? यस सर। लास्ट चीज जो मैं आपके साथ करना चाहता हूँ, ये लीनियर इक्वेशन से लेना देना नहीं है, बट हमको अमेरिकन करेंसी सिस्टम के ऊपर कुछ यूनिट बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, यूनिट कन्वर्जन के। सो अमेरिकन करेंसी सिस्टम को क्विकली रिवाइज कर लेते हैं एक बार, अगर नहीं पता है तो फिर अभी पता चल जाएगा, अदरवाइज रिवाइज कर लेते हैं। तो विच इज द स्मॉलेस्ट करेंसी यूनिट, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट करेंसी यूनिट कॉल्ड अमेरिकन करेंसी यूनिट? बोलो। Cents. Cents, correct. Cents. Okay, so how many cents equal to a dollar? How many cents will make $1? I don't know. Okay, guys. 100 cents. Cents, century, 100. So 100 cents will make up $1. फिर उनके यहाँ एक और यूनिट है which is called nickel. Let's say if you have heard about this. Nickel. So 1 nickel will be equal to 5 cents. कुछ ऐसे लिखते हैं वो लोग cents. मैं ऐसे ही लिखता हूँ पूरा. 1 nickel will be equal to 5 cents. Or 20 nickels will be equal to $1. So I want you to remember this. निकल के बाद क्या आता है? Dime. 1 dime will be equal to 10 cents. So how many dimes will make $1? 10 times. 10 dimes will make $1. I want you to next remember this. ये जो मैंने बॉक्स में बनाया है ये तो याद रखना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि ये कन्वर्जन वो नहीं देंगे अगर इस पे क्वेश्चन आ गया तो। The next is a quarter. Okay. So 1 quarter will be equal to 25 cents. Or 4 quarters will make $1. बोलो ये समझ में आया? ये आपको समझ में क्या आना है, मतलब ये याद रखना है। Yes. Now on SAT, I found a problem which was based on this question. तो अब हम लोग क्या करते हैं? You guys open your book, chapter number 2 पे जाओ। ये नोट कर रहे हो क्या अभी? Should I give you some more time to note it down? So done with morning. ठीक है। So open chapter number 2 and मैं बताता हूँ, एक मिनट। हाँ, I'll tell you which question. Exercise 2.1 में ये क्वेश्चन है which is क्वेश्चन नंबर 17। देखो जरा, ये सारा वाला क्वेश्चन है क्या? सारा हैज अ जार filled. Yes. Yes. So I want you to solve question number 17 and I give you 1 full minute. Exercise 2.1, question number 17. Please solve. So मुझे डायरेक्ट आंसर नहीं चाहिए. Let me know if you have made some equation. Then we can solve it together.
Have you guys read the problem? Can we do this together? Let's do this together. Give me some starting steps. If you have read it, I know that I have to find number of, क्या find करना है? Number of nickels. So, you know, the common sense says जो भी find करना है वो variable define कर दो. Let number of nickels with Sarah be n. Let number of quarters that Sarah has be q. Something like this. So my first equation is, can I say n plus q is equal to, कितने coins हैं उसके पास? 135. 135. This is my equation 1. Number of nickels coin she has, value नहीं है ये, numbers है, absolute numbers. And number of quarter coins she has, value नहीं है again. Total 135 coins. Is this thing clear? Yes. What will be the second equation? अगर ये crack किया होगा ना आप लोगों ने, ये question हो जाएगा. Second equation बताओ. Nickels equal to 135 minus Q. So one by one. Tithi Singh, you go first. Nickel is equal to 135 minus quarters. Okay, वो तो same equation है. I want second equation. जो value के terms में आएगा, because how many dollars she has? 22.75. So let me convert everything into dollars. I have n nickels, and every 20 nickels will give me $1. So can I say n by $20 है उसके पास? चारुल बोलो. Yes, sir. देखो मेरे पास n number of nickel के coins हैं और 20 nickel coins $1 देता है. So can I say n divided by 20 is the value in dollars of nickel coin? Sir, should be n multiplied by 20. बेटा n multiply by 20 करेंगे तो मान लो मेरे पास 100 निकल के कॉइन्स हैं. 100 निकल का कॉइन 20 कॉइन पे $1 मिलता है तो $5 होगा. अगर मैंने 20 मल्टीप्लाई किया तो वो $2000 हो जाएंगे, जो कि गलत हो जाएगा. समझ में आ गया? डिवाइड क्यों करेंगे? Similarly, I have Q quarter coins and every 4 coin will give me $1. So Q divided by 4 is value in dollars from quarter coin. Yes. Let me add these two. मिस कोठारी, ये सब समझ में आ रहा है आपको? हाँ समझ रहे. 22.75. ये मेरा इक्वेशन 2 है. बोलो गाइस, am I making sense? ये सब समझ में आ रहा है? Yes. बस आंसर आ गया. अब इसको सॉल्व मत करना, यहीं पे आंसर आ गया है. अब क्या निकालना है? नंबर ऑफ निकल कॉइन्स निकालना है. उसकी वैल्यू 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन में होगी. चारुल, गिव मी 4 ऑप्शंस. So the 4 options are 25, 55, 80 and 130. And 130. ये B है, ये C है, ये D है. चारुल, you pick one option that you think is right. कुछ भी randomly pick करो जिसको तुम सबसे पहले ट्राई करना चाहती हो. Sir, randomly कोई भी. हाँ, कोई भी जो आपको लगता है ये नंबर ऑफ निकल कॉइन्स हो सकते हैं और ये इजी है, सबसे पहले चेक करना. 135. हाँ, 135. B. 55. Yeah. Okay. So guys, let's see. अगर n 55 है तो what will be value of q? अगर ये बोल रही है, ऑप्शन बी को ट्राई करते हैं सर. n आएगा 35. सॉरी 55. तो q निकाल सकते होगा, कितना होगा? How much? Right? 135 minus 55 करो तो q का वैल्यू आ जाएगा. Yes. अब आगे सॉल्व करते हैं. n की वैल्यू वापस रखो. 55 by 20 प्लस 80 by 4. देखते हैं 22.75 होता है क्या. 80 by 4 क्या मिलेगा मुझे? 80. और ये है 55 by 20. अगर ये 60 by 20 होता तो क्या मिलता? 3. मगर ये 5 by 20 कम है. 5 by 20 मतलब 1/4 कम है. तो 3 में 1/4 कम करेंगे तो क्या आएगा? तो दोनों का सम क्या आएगा?
तो क्या n 55 हो सकता है? सबसे पहला assumption. So चारुल, you have your luck playing today. जो तुमने पहला ऑप्शन लिया वही राइट था. तो मतलब अगर तुम तुक्का भी मार के आती तो आज 1 पॉइंट मिल जाता तुमको. But this is how you solve it. What is the learning, Nidhini? The important learning is options are additional information. इनको इग्नोर मत करना और स्कूल की तरह इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करने मत बैठ जाना वहां पे. Will take you 5 minutes और आंसर आ जाएगा, but 5 minutes is a very big cost. सर मुझे एक नहीं समझा, वो Q का वैल्यू 80 कैसे आया? अच्छा, what is the first equation? This. Q. Charul said, let us assume option B right है. उन्होंने number of nickels पूछा. Let's say number of nickels 55 है. Put n equal to 55 here. What will be value of Q? Oh, okay, 80. So go by options with such problems because इनमें से कोई, मान लो आप 55 नहीं आप 130 लेते तो आप देखते रहिए तो नहीं हो रहा है. रिजेक्ट करो जैसे ही पता चलेगा कि कभी वो 22.5 हो ही नहीं सकता. 80 लो, 25 लो. मान लो आपका लकी डे नहीं, आपने पहले ये ट्राई किया, फिर ये ट्राई किया, फिर ये ट्राई किया, ये तीनों नहीं बैठा. ये ट्राई मत करना क्योंकि एक यही बचा हुआ है, यही होगा आंसर. Okay, so this is what I wanted you to solve. Now what we will do is we will take, अभी 1 घंटा हो गया क्लास को, so we will take a 5 minutes bio break. हम लोग, मेरे घड़ी में हो रहा है 12:35, 12:40 we meet again and then we will start with the exercise. I'm done with all the theory part. Okay guys, see you in 5 minutes. Chalo, now since we are back and since you have a book with you, मैं वहीं से चालू करता हूँ. So exercise 2.1, question number 14. Please solve. You get a minute's time and then we will discuss. 14 वाला solve करो. Answer announce मत करना. Just do a hand raise. I'll come to know. आप तीनों मुझे दिख रहे हो तो आप बस अपना हाथ रेज करना and I'll come to know you have arrived at an answer. 1-4. Interpretation based question है ये. Y is equal to mx plus c. Okay, Nidhini, hold. You can type your answer, Nidhini, and send me. Send it to me only. Tithi done? ठीक है. Waiting for Charul and then we will discuss. Which question are you solving, Nidhini Kothari? 12. अच्छा, वेरी गुड. कौन सा सॉल्व करना था भाई गाइस? चारुल, कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना था?
तिथि सिंह तो Sorry, my bad. चलो करो 14 करो निधिनी चलो तिथि सिंह अनाउंस योर आंसर ए बी सी डी में कौन सा क्या करना है तुमको चारुल क्या करना है फैन ऑफ करना है कम करना है कर दिया ओके अपना आंसर अनाउंस करो ए तिथि करेक्ट चारुल तुमको स्लो बोलना पड़ेगा शायद थोड़ा सा स्लो बोलो स्लो मतलब पेस पेस स्लो करो हाँ So I also got 8. I got half. half option A half is absolutely right because if you look into this question मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर करता हूँ if you look into this question it says the normal systolic pressure is this for an adult अगर इस इक्वेशन को आप रीराइट करोगे y is equal to mx plus c में तो आप इसको ऐसे लिखोगे y is equal to m x plus c अब उन्होंने Easily, ये करने की जगह पे we just put like an age when X है तो फिर उससे भी रेशियो आ सकता है. No, so they are asking according to this model for every increase of 1 year in age, मतलब इसको अगर 1 यूनिट से इंक्रीज किया, what will be normal systolic pressure ये जो ब्लड प्रेशर है इसमें कितना इंक्रीज आएगा? इसमें इंक्रीज आएगा m के बराबर and m is 1/2 वो जो अभी हमने देखा था 15 rupees per kilometer, so which is option A. बोलो ठीक है? Yes. So what I didn't do it like this though. So what I did was जो हमें formula already दिया हुआ है, right? B is equal to x by plus 220/2. So मैंने x की जगह पे दो values डाले, एक equation दूसरा equation है जो 0.5 increase हो रहा था, that's like that. Correct. So your method is correct, Tithi. What you have done is you assume some value of x. Let's say 1 से बढ़ाया, let's say 5 लिया, फिर next 6 लिया, and then you saw कि p कितना से increase हुआ, and you saw it was 0.5, and your answer became 0.5. That's absolutely correct. What I am saying is, so it's not wrong. What I am saying is, just by looking at equation, you will realize that they are asking value of m. तो वो visual inspection का question हो गया. Just look at it, and you will see that m is 1/2, and that is your answer. तो आपका मेथड सही है you have not done it wrong it's correct you could have saved some time that's the only point I have चलो next question पे जाते हैं and I remove spotlight I go back I want you to solve question number 16 guys 16 हाँ निधिनी 16 सॉल्व करना है और वो क्वेश्चन में तुम लोग देखोगे कुछ सॉल्व नहीं करना है पढ़ो उसको आई गिव यू 1.5 minutes 90 seconds सॉल्व करो You have to form equations. That's all. Typical SAT type problem.
I think we lost them. Anyway, they'll join soon. I got third as answer. 16. Option third is correct. Absolutely correct. Very good. So it's basically reading that articulation, वो जो भी दिया है paragraph में, and converting it into equation. Answer आएगा option C. You got option C, right? Yeah, C. तो अब क्योंकि वो तुम्हारा right है, and which is this one. Since you have got this right, there is nothing to discuss. अगर आपको discuss करना है तो बोलो, otherwise we go to next problem. No, I got it. We can like move. तो फिर आपके बुक में जाओ और वहां पे देखो चैलेंज प्रॉब्लम 1 दिख रहा है आपको एक विंड स्पीड का विंड स्पीड हाँ ठीक है प्लीज सॉल्व दिस एंड टेक 2 minutes टाइम आई गिव यू करो सॉल्व ज्योति क्या हो गया था अनम्यूट करो क्लासरूम को वो लाइट एकदम ब्लिंक हो गया सब नेट ठीक है नो प्रॉब्लम्स सो गाइस वो क्वेश्चन कर लिया था आप दोनों ने Yes, sir. सो चलो चारुल यू अनाउंस योर आंसर फर्स्ट So I got C option. सी तिथि Yes, sir. C is correct. Any doubts here? So this is a typical SAT problem where there will be some story, एक articulated paragraph होगा. You are supposed to decode it, get into the equation form. That's all, and nothing to solve. ऐसा एक question पक्का आएगा. तो अब आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों को जाना है challenge problem पे. Every chapter Tithi has some challenge problem which is towards the back end of the chapter, end of that chapter. So I want you to solve challenge problem 1. SAT challenge problem 1 कोई wind speed वाला एक question होना चाहिए. Charul, if you can just guide her. Is she there on that page? Yes, yes, sir. ठीक है. SAT challenge problem 1, 1.5 minutes. Interpretation based question है ये भी. There is nothing to solve. मेरा friendly advisor, read all 4 options. And Nidhini, you are absolutely right. Very good. थोड़ा सा हायर ऑर्डर का ये क्वेश्चन है प्लीज सॉल्व निधिनी व्हाट यू कैन डू इज इन द मीन टाइम गो टू चैलेंज प्रॉब्लम 2 डन तिथि लेट मी नो व्हेन डन Yes. चलो तिथि अनाउंस योर ऑप्शन B. बी एज इन बॉम्बे Yeah. ओके एंड चारुल कुमावत C. सी एज इन कैलकाटा Charlie. हाँ चारुल सो सी इज करेक्ट अब आते हैं हम इस पे क्योंकि ये ऑप्शन तिथि का सही नहीं आया है सो दिस कॉल्स फॉर डिस्कशन तिथि हियर इज द क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस एंड निधिनी विल एक्सप्लेन अस
Why C and why not D? So in the No, not like this. First, read the question loudly. okay. The wind speed is in miles per hour measured H hours afternoon in a particular coastal city is given by the equation above. What is the best interpretation of 2.4 as shown in the equation above? So it will not be option B, it will be C, because in option B, it is mentioned that the wind speed decreases to 2.4. If that was the case, then S would have been equal to 2.4. Whereas Good job. Very good. बहुत अच्छा आपने इसको ऑब्जर्व किया है एंड बहुत अच्छा पॉइंट आउट किया है. Titi, did you get what she said? It Yes. says it decreases to something. If speed decreases to something, then that is value of S. Whereas they are asking what is the interpretation of 2.4, which is your M, और उसके आगे लगा हुआ है एक negative sign. Negative is telling me that it is decreasing and it is decreasing by 2.4 miles per hour each hour rather than decreases to. So hence answer is option. option C. Didi Singh, boliye, is this Yes. fine with you? Are you satisfied here? Let's go to question number 2, guys. Challenge problem 2. And Nidini, you can text me your answer for SAT challenge 2. So this is like an ultimate problem. This is real SAT problem. ये समझ में आ गया तो मतलब पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको इंटरप्रिटेशन का. ये कौन सा कर रही हो आप निधिनी? वो पिग वाला क्वेश्चन है क्या ये? हाँ, गिनी पिग पर. ओके, डू इट अगेन. What is the best interpretation of 25 as shown in equation above? Tithi, Charul and Nidini. Is it D? D as in Delhi. Okay, let's see. Charul, any answer? वहां 25 डिनोमिनेटर में है एंड मेरा फ्रेंडली एडवाइस यही रहता है चारों ऑप्शन पढ़ के आंसर चूज करो. नो मैटर हाउ टेम्पटिंग इज ऑप्शन, लेट्स से प्रीवियस ऑप्शंस, चारों पढ़ लो एक बार. Nidini, you want to change your answer? You want to stick to the same answer? I'm confused between A and C. ठीक है, तो सबसे पहले हम है ना आपका A लेते हैं, उसके बाद C लेंगे, उसके बाद तिथि का D लेंगे एंड चारुल का भी कोई आंसर आया नहीं है. सो चारुल, व्हाट यू डू इज अब साथ में सॉल्व करते हैं. हाँ, Delhi. so will you be able to defend it for us? Why D? So read it read loudly this problem and then we will solve it together. Padho. In a study, the male of 89 iguana pigs were trimmed to the same length and measured over the course of 2 months. The average lane length L in millimeters D days after the start of the study is approximated by the equation above. What is the best interpretation of 25 as shown in the equation above? Right. Now let's अच्छा एक काम करते हैं, उल्टा करते हैं. निधिनी, let's go to option A. ठीक है, ऑप्शन ए पे.
करते हैं एंड लेट्स सी व्हाई नॉट ऑप्शन ए, बिकॉज आपने ऑप्शन ए बोला है, तो क्या प्रॉब्लम है, ऑप्शन ए आंसर क्यों नहीं हो सकता? एनीबडी हु कैन से व्हाई नॉट? एवरेज नेल लेंथ started at 25 millimeters. Guys, what do you say? What was average nail length starting value? 10. उन्होंने आपसे ना ये 25 का इंटरप्रिटेशन पूछा नहीं देनी, और स्टार्टिंग वैल्यू तो 10 है ना, ये देखो इनिशियल वैल्यू, स्टार्टिंग वैल्यू, y इंटरसेप्ट, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट आते हैं सी पे। सी वॉज द कंफ्यूजन। एवरेज नेल लेंथ reached a maximum of 25 millimeters. What is the problem with this option? Anyone? तिथि, चारुल, कोई भी बोल सकता है। तिथि, you take lead. Why not C? Sir, प्रॉब्लम क्या है? It reached a maximum of 25 millimeters. निधिनी, सेम थिंग, ये तो L का वैल्यू होगा ना, अगर होगा तो भी ये L का वैल्यू होगा ना, जो आपने S में अभी किया था विंड में। ये 25 का इंटरप्रिटेशन तो नहीं हो सकता, बोलो। ओके, अब है ना, डी को देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग सा है डी वाला, विच इज द राइट ऑप्शन। एवरेज नेल लेंथ इंक्रीज्ड बाय 1 मिलीमीटर एवरी 25 डेज। देखो, अगर डी को आप रखोगे 25, तो 25 बाय 25 आपको मिलेगा 1। सो हर 25 दिन में whenever d reaches 25 या मल्टीपल ऑफ 25, वो 1 से बढ़ जाता है नेल लेंथ। 10 is nail length, starting वाला। So nail length plus nail length will give you L, which is again nail length. So every 25 days, nail length increases by 1 millimeter. 50 days, 2 millimeters. 75 days, 3 millimeters. Bolo, are we making sense here? yes, So answer is D. Very good. बहुत अच्छे से किया। तो दोनों बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। किसी ने कोई सा क्वेश्चन अच्छा किया, किसी ने कोई सा, तो नो प्रॉब्लम्स। लेट्स गो टू योर बुक नाउ एंड सॉल्व सम अदर प्रॉब्लम। मैं आपको बताता हूँ which one would I want you to solve. चैलेंज प्रॉब्लम 3 करते हैं। कौन सा है, कॉफी शॉप वाला है क्या चैलेंज प्रॉब्लम 3? yes, sir. Yes. So I give you again पूरा 1.5 minute, please solve. Coffee shop challenge problem 3. Forming these linear equations. Done? Okay, hold on. Charul, Nidhini, waiting for you guys. Question number 3 from challenge problems. Nidhini, you send me your answer in the chat box. Charul, हो गया क्या? ठीक है, चलो अनाउंस करो अपना आंसर चारुल।
Yes. Huh? C. C. Okay. Tithi? So A. A. Good. Nidini? Even I'm getting answer as A. Very good. So majority is not always right. अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को. तिथि सिंह, प्लीज रीड इट लाउडली. 1 मिनट रुक जाओ, बस मैं शो करता हूँ ये स्क्रीन पे, ताकि जब तुम जब पढ़ोगी तो आई अंडरलाइन फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स. So A तो कोई नहीं सकता. कौन बोल रहा है ये? ए तो हो ही नहीं सकता. अच्छा ठीक है, तो अब आपने इस तरह का एक चैलेंज थ्रो किया है, तो अभी देखते हैं ए हो सकता है कि नहीं हो सकता है. आपसे ही चालू करेंगे. ये बताना ए क्यों नहीं हो सकता, बट उससे पहले तिथि प्लीज रीड इट आउट. Yeah. A coffee shop owner would like to create a blend of cinnamon and hazelnut flavored coffee that sells for $8 a pound. Currently, the cinnamon coffee sells for $6 per pound, and the hazelnut coffee sells for $9 per pound. Which of the following systems of equation can be used to determine the amount C in pounds of the cinnamon flavored coffee and the amount H in pounds of the hazelnut flavored coffee? That should be mixed to obtain 20 pounds of the desired blend. 20 pounds of desired blend. So if you guys understand, the person wants to create a flavored coffee that he can sell for $8 a pound. Cinnamon का कॉस्ट दिया है पर पाउंड, हेजलनट का कॉस्ट दिया है पर पाउंड, उसको मिक्स करना है. C pounds of cinnamon and H pounds of hazelnut so that 20 pounds वो blend बना सके. So वो कहाँ गई? चारुल कुमावत. चलो, कौन सा आंसर तो हो ही नहीं सकता बोला ना तुमने, उसको डिफेंड करते हैं. So मैंने last की 3 lines है question में, they are saying that which of the following system of the equation could be used to determine the amount C in pounds of the cinnamon flavor coffee and the hazelnut H. So if we put pressure on C and H, so they are going to mix. That should be mixed to obtain 20 pounds of the desired blend. वेरी गुड गर्ल, वेरी गुड. आप समझ पा रहे हैं वो क्या बोल रही है? आपने अगर सी सिनेमन लिया और उसमें H पाउंड हेजलनट लिया, तो ये टोटल आपको बनाना 20 पाउंड्स है. C पाउंड्स ऑफ सिनेमन, H पाउंड्स ऑफ हेजलनट, तो C प्लस H एनीवे 20 होना चाहिए. पॉसिबल आंसर्स आर बी या C. ए और डी तो आंसर हो ही नहीं सकता, बिकॉज C प्लस H को तो 20 होना है. बोलो यू टू. Yeah, sir. Right. परफेक्ट, वेरी गुड. तो ये तो सही बोला चारुल. अब आपने कौन सा ऑप्शन पिक किया है चारुल? So मैंने C लिया है, but मैं श्योर नहीं थी. नहीं, तो ये एक्सक्यूज तो नहीं चलेगा, श्योर नहीं थी या श्योर थी. सी जैसे आया हम लोगों को बताओ कैसे आया सी. तो एक पार्ट तो ये क्लियर हो गया दैट C प्लस H विल बी 20. लेट्स लुक एट दिस. Now if I take C pounds of cinnamon, it's going to cost me $6 per pound. Can I say 6C is the total cost of cinnamon? Yes. Okay. $8 per pound of, sorry, 8 नहीं है भाई, वो 9 है. $9 per pound of hazelnut. I have taken H pounds of hazelnut. This is the total pounds of hazelnut in cost terms. So total cost of cinnamon plus total cost of hazelnut, कितने blend कितने पाउंड का है? 20 pounds, such that उसका costing क्या है? 8 per pound. So total hazelnut cost plus total cinnamon cost will be equal to total cost, which is 160. Answer is option C. अब इसमें आप लोग पूछिए मुझसे, क्या समझ में नहीं आया? Got it? Clear है ये? Yes, sir. Fantastic. Okay. Then I want you to solve. एक मिनट बताता हूँ क्या solve करना है. I want you to solve question number 3. वही तो किया. नहीं, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3. एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 में आओ. चैलेंज क्वेश्चंस नहीं. 2.1 क्वेश्चन नंबर 3.
रियल एसएटी प्रॉब्लम। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। The system has infinitely many solutions. Find the value of A. So what is the coefficients का ratio वाला relationship वो आपको याद होना चाहिए for infinitely many solutions. Find the value of A. You send your answer in chat box, Nidhini. Yes, I'm waiting. Announce your answer as soon as you get to an option. A. A. Charul? Sir, A. A. Okay, A as an apple, right? Yes. Nidhini, waiting for you. ये इतना टफ है, कितना कैलकुलेशन कर रहे हो? आंसर इज ऑप्शन ए. निधिनी, व्हाट हैपेंड? मुझे बताओ क्या समझ में नहीं आया इसमें? I made the equation, but I'm not able to solve. Why make an equation? देखो क्या है ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन में कांस्टेंट इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन. इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का है कि वो जो रेशियो होता है ना A1 upon A2. A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2. करेक्ट. अब दे वांट ये निकालना है आपको, तो मैं क्या करता हूँ A1 upon A2 की जगह लेट मी राइट 3 upon -15. हाँ, कैन आई राइट दिस इक्वल टू C1 upon C2. ये हो गया C1 upon C2. ये माइनस माइनस गेट्स कैंसल्ड. 3 1s are 3 5s are. सो A का वैल्यू विल बी 7 upon 5, जो कि सिर्फ इसी ऑप्शन में मिल रहा है. आंसर इज ऑप्शन ए. निधिनी, दिस इज डन. पूछो क्या समझ में नहीं आया? समझा. समझा तो क्वेश्चन नंबर 5 करो. 30 seconds. Everyone, question number 5, 30 seconds. 5, single digit 5. How many solutions are there to the system of equation? Sir, done. Okay. Tithi Singh done? Yes, sir. Nidhini waiting for you. And please announce your answer as soon as you get an answer, Nidhini. Sir. So I didn't understand how to solve this. So क्या निकालना है? It is given that system of equations have how many solutions? 0. नहीं. They've asked for Oh, they five. are asking how many solutions it will have. Yes, sir. ठीक है. Charul, what's your answer? Which option? So option A, 0. 0. 0. Both getting A. Nidhini, when do you get 0 solution? क्या होता है coefficient के ratio का relationship? When B1 upon B2 is not equal to C1 upon C2.
Yeah, but they are A1 upon A2 is equal to B1 upon B2. Yeah. मतलब x का कोएफिशिएंट्स का रेशियो इज इक्वल टू y के कोएफिशिएंट्स का रेशियो बट नॉट इक्वल टू कांस्टेंट्स का रेशियो, राइट? अब जरा देखो यही हो रहा है क्या उस क्वेश्चन में? A1 अपॉन A2, A1 क्या है 2, A2 क्या है लेट्स से 1, B1 अपॉन B2 6 अपॉन 3, ये भी 2 अपॉन 1 है, ये दोनों इक्वल है बट दे आर नॉट इक्वल टू 3 अपॉन 2। तो अगर ऐसा होगा तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस वुड बी 0, आंसर इज ऑप्शन ए। निधि नहीं बोलिए। Okay, got it. तो इतना सिंपल एक स्ट्रेट क्वेश्चन आ सकता है गाइस, और ये रेशियो याद रखना जरूरी है, इसमें इससे ज्यादा और कुछ नहीं होगा, बट यू मस्ट नो, ये थोड़ा सा इसको ध्यान रखना। चलो वी गो बैक एंड नाउ आई वांट यू टू सॉल्व। ये किया था कि हमने, ये नहीं करना है, नहीं, दैट्स ओके, दैट्स ओके, दिस इज सिंपल प्रॉब्लम, सारा वाला हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, 1-8, I want you to solve question number 18, 1-8, exercise 2.1, full 1 minute. इक्वेशन बनाना है और उसको सॉल्व भी करना है, सब्स्टिट्यूशन से, एलिमिनेशन से, जैसे भी करना है। प्लीज डू दिस वन। How many people attended the morning class is what they are asking. Yes, correct. Ms. Kothari, correct. So if you can form the right equation and then solve it, ये हो जाना चाहिए। Tithi and Charul, as soon as you are done, just announce the option. So with the equation form would be 8 plus 3 into 16 is equal to 5. तो वो अभी कर लेते हैं। चलो चारुल, सेम इशू है, इक्वेशन नहीं बन रहा है। हाँ सर, ठीक है। सो निधिनी, व्हाई डोंट यू रीड इट आउट फॉर अस, और है ना मैं साथ साथ में इसको यहाँ बनाता जाता हूँ और आप दोनों देखो। चलो गो अहेड, हेल्प मी आउट निधिनी, रीड इट आउट, अनम्यूट करो एंड रीड आउट। पूरा ब्लैकआउट है। चारुल, यू रीड इट आउट। okay sir. A yoga studio charges $8 per student for its morning class and $16 per student for its evening class. रुको। So let's say I have M students attending morning class and I have got E students attending evening class. ठीक है, तो मॉर्निंग क्लास का चार्ज क्या है? $8. $8। और इवनिंग क्लास का क्या चार्ज है? How much? 16। ठीक है, go ahead. So this is total morning का collection, this is total evening का collection. Then 3 times as many students attended the evening class as attended the morning class. Hold. 3 times as many students attended the morning class as evening class. Have I read it correctly? 3 times as many students attended morning class as evening class. 3 times as many students attended the evening class as attended the morning class. ठीक है, उल्टा समझा मैंने। 3 times as many students attended the evening class as attended the morning class. अब इसको कैसे करेंगे? This is very important. So let's say I have M students attending morning and E students attending
evening. They are saying evening में 3 times स्टूडेंट्स थे जितने मॉर्निंग में थे. तो अगर मुझे दोनों को इक्वल करना है तो 3 किस तरफ मल्टीप्लाई करना है, राइट या लेफ्ट? Because E was 3 times greater than M. अगर इक्वल करना है तो M में 3 मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके वो E के बराबर होगा. बोलो तिथि सिंह. Yes, sir. Okay. This is the key equation. ये अगर समझ में आ गया तो सब काम हो जाएगा. So this is my equation 1. Go ahead, Charul. If the yoga studio earned $2,520 on Friday, how many people attended the morning class? ये मेरा equation 2 हो गया. Total morning collection plus total evening collection is equal to 2520 and ये relation मालूम है 3M is equal to E. How many student attended morning class? तो सबसे अच्छा तरीका है 8M plus E की जगह रखो 3M is equal to 2520. तो ये हो जाएगा 8M plus 1632 48M is equal to 2520. या फिर ये हो जाएगा 56M is equal to 2520 या M हो जाएगा 2520 divided by 56. M का वैल्यू क्या आ रहा है निधिनी? 45. सॉरी 45. 45. Option B. Option B. अब इसमें जो पार्ट समझ में नहीं आया वो आप मुझसे पूछेंगे. Tithi, is this clear now? Yes, sir. Okay. So ये पार्ट कंफ्यूजन होता है कि ये 3 कहाँ मल्टीप्लाई करना है अगर M और E को इक्वल करना है. ये क्रैक हुआ तो हो जाएगा. सॉरी सर मैंने 3 जो है वो E में मल्टीप्लाई कर दिया. हाँ, which is a classic error which happens. तो उसको सही करने का तरीका ये होता है चारुल, that write the 2 variables and then ask yourself which is greater. If this is greater and if I have to balance this on a taraju, I should multiply this by 3. Yes, sir. चलो. So having done this, now I want you to solve. ये भी कर लोगे आप, ये भी easy है. Cost of telephone line. हाँ, I want you to solve this one. I want you to solve sad challenge problem number 6. थोड़ा सा हिप हॉप हो रहा है बट चलेगा. ये करो. बास्केटबॉल गेम का एक क्वेश्चन होगा, देखो चैलेंज प्रॉब्लम में. Yes. I want you to solve this. And time given, and this is a grid-in question. So, तिथि grid-in question वो होता है SAT में जिसमें ऑप्शंस नहीं होते हैं. कोई एक आंसर निकलता है और आपको वो आंसर लिखना होता है. अब क्योंकि डिजिटल होगा तो आपको आंसर टाइप करना पड़ेगा यूजिंग कीबोर्ड. चलो, go ahead, do this. Nidini, you type your answer and send it to me in chat box. 1 minute का time. How many total timeouts were used during the game? Question number 6. करिए. Yes, correct. सबको भेजा वो आंसर? No, I personally sent it to you. नहीं, आपने एवरीवन को भेज दिया. ठीक है. एनीवे वो तो चेक नहीं कर पाएंगे. My bad, वो और डिफॉल्ट everyone आता है तो फिर everyone हो गया. Yes, yes. No problem. How many timeouts were there in this game?
This is Khan Academy level 4 question. Make sure you guys create your Khan Academy account. डिजिटल एसएटी के प्रैक्टिस के लिए. Yes, guys, waiting. तिथि चारोल इतना समय नहीं लगना चाहिए. क्वेश्चन समझ में आ गया? What is the duration of this game? 72 minutes, but it lasted for 72 Ideally 60 minutes, but it lasted 72 minutes. Why? because timeouts were given each of 90 seconds. Correct. So how much total time went in the timeouts? 12 minutes. 12 minutes. Each timeout was for 90 seconds. So let me convert this 12 minute into second. Can I say so many seconds was wasted because of timeouts? Where each timeout was for 90 seconds, तो इसको 90 से divide करते हैं. This will give me number of timeouts. बोलो guys. Yes, sir. 0 से 0 cancel. 3 2s are. 3 3s are. 3 1s are. 3 4s are. Sorry, 3 2s are बोला था. 3 2s are. 3 4s are. 4 2 is equal to 8. There were 8 timeouts. So I did it using another method. Go ahead. Well, actually, it doesn't include linear inequation. What I did is total game was of 60 minutes, but it lasted for 72 minutes. So the total timeout would be 72 minus 60, that is 8. 72 minus 60 is 8. Madam, you are very lucky कि आपका आंसर 8 आ गया. और ये भी मैं और and I am also lucky कि तुमने ऐसा बोला. कैसे 72 minus 60 is 8? नहीं बोलो, गड़बड़ किया ना तुमने? Yeah, sir. And you were lucky today कि वो 72 minus 60 तुम्हें 8 लेके आ गई और 80 इसका right answer भी आ गया. तो बेटे, what I am trying to tell you is 72 minus 60 12 minutes में आ रहा है. मान लो तुम 12 निकाल देती और 12 डाल देती तो गड़बड़ हो जाता. ये तो वो टाइम आउट का टोटल ड्यूरेशन है. Each time out is for 90 seconds. तो उसको मैंने सेकंड में कन्वर्ट किया, या इसको तुम मिनट में कन्वर्ट कर लो. 1.5 हो जाएगा ये. So 12 divided by 1.5 will be 8. Okay. Right. So we will go ahead and I want to do a small concept with you. There's a very typical type of problem. मेरे पास कितना समय? 1:35 पे क्लास खत्म होती है. I've got 8 minutes. So I'll do a small concept. And I can tell you that one problem minimum is what you can see of this type. If I have to give you a heading कि क्या है? So we are talking about graphing a linear equation. So they may give you an equation and they may ask you कि ये 4 options हैं ग्राफ के, बताओ कौन सा ग्राफ रिप्रेजेंट करता है गिवन इक्वेशन को. इस तरह का कुछ क्वेश्चन हो सकता है. या फिर एक ग्राफ दे दिया आपको और ये पूछा कि बताओ कौन सा 4 में से कौन सा इक्वेशन ऐसा है जिसका ऐसा ग्राफ बनेगा. तो ये ग्राफिंग बेस्ड इक्वेशंस हैं. लीनियर इक्वेशन में व्हेनेवर यू आर ग्राफिंग दैट इक्वेशन ऑन ग्राफ or vice versa, from graph you are trying to create a linear equation, I have a small advice for you. You should follow the following method. So graphing में आप क्या कर सकते हो? हम लोग पढ़ रहे हैं graphing the linear equation. Graphing the linear
equation. We are trying to understand this. So one of the best ways is, or the step one is, if an equation is given, I would want you to find value of y for x equal to 0. So put x equal to 0, find the value of y. इसका कोई एक वैल्यू ढूंढ लो, तो आपको एक पॉइंट मिल जाएगा उस इक्वेशन का. Step 2 would be, let's say, put y equal to 0 और x कोई एक वैल्यू निकाल लो. ऐसे करके try and find minimum 3 to 4 values. तो ऐसा एक टेबल बना लो, x, y, मान लो हमने एक इक्वेशन लिया y is equal to 3x plus 4. तो पहले रखो x equal to 0, y आ जाएगा 4. इसी तरह y को रखो 0, x आ जाएगा -4/3. Am I correct? Yes. अगर मैं y को 0 रखूंगा तो ये 4 इधर आएगा, -4 divided by 3. Let's say I take x as 1, y will be 7, x as 2, y will be 10. ऐसे कुछ वैल्यूज निकालो और जो आपको ऑप्शंस में ग्राफ दिया है, टेस्ट एटलीस्ट 3-4 वैल्यूज, रादर 4 वैल्यूज ऑन दीज ऑप्शंस एंड सी कौन सा ग्राफ है जो उसको सेटिस्फाई करता है. नंबर 1. नंबर 2, इस इक्वेशन को देखकर भी आप कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाएंगे, क्योंकि मुझे दिख रहा है m पॉजिटिव है, तो मतलब वो ग्राफ ऊपर जा रहा होगा लेफ्ट टू राइट. अगर किसी ऑप्शन में ग्राफ नीचे जा रहा है लेफ्ट टू राइट, उसको एलिमिनेट करो. ठीक है, तो एक क्वेश्चन साथ में करते हैं टू प्रूव माय पॉइंट, एंड ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इसको साथ में करते हैं. क्वेश्चन ये आपका चैलेंज क्वेश्चन बुक में भी दिया है, बट आई एम नॉट गोइंग बाय द बुक राइट नाउ, आई विल गो बाय दिस. आप भी यहीं पे देखो. सो द फोर्स नीडेड टू रिस्टोर अ फ्लेक्सिबल स्ट्रेच्ड स्प्रिंग 2 सेंटीमीटर टू इट्स ओरिजिनल लेंथ इज 0.5 न्यूटन. तो एक मेरे पास स्प्रिंग है, देखता हूँ स्पॉटलाइट करता हूँ. So I got a string. If I stretch it by 2 centimeter, the force that is required to restore back to its normal position is 0.5 newtons. For every additional centimeter of displacement, जितना ज़्यादा आप उसको खींचेंगे, the restoring force will also increase. So higher the displacement, higher the force required to bring it back. Which of the following graph represent relationship between displacement दिया है x में in centimeters and restoring force F दिया है in newtons. तो आप देखोगे चारों में x और F plotted है, x x-axis पे है और F y-axis पे. तो पहले तो मुझे ये बताओ, between x and F पॉजिटिव रिलेशनशिप है या नेगेटिव रिलेशनशिप है? पॉजिटिव. अगर पॉजिटिव रिलेशनशिप है तो ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन कभी आंसर हो ही नहीं सकता? ए. सबसे पहले इसको एलिमिनेट करो, ये तो वो आंसर है ही नहीं. अब सारी फाइट है बिटवीन बी सी डी. लेट्स से बी सी डी. आंसर कभी भी बी नहीं हो सकता. कैन यू टेल मी व्हाई? बिकॉज़ चारुल मेहता, यू, चारुल कुमावत, यू गो फर्स्ट. सर ऑप्शन बी में जो ग्राफ है उसमें एफ एक्सिस से लाइन शुरू हो रही है फ्रॉम 2. हाँ. Because in the question we are doing with 0.5 and something near to 0. Not exactly बेटे, नहीं. Tell me why B cannot be answered. तिथि? And x over here is 0. भाई जब कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है तो फोर्स लगाने की जरूरत क्या पड़ी आपको? डिस्प्लेसमेंट 0 है ना, x देखो 0 है, तो 2 न्यूटन का फोर्स क्यों लगाना है जब उसको रिस्टोर करना है? तो रिस्टोर करना ही नहीं अगर डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ. बोलो, आर यू गाइस विद मी? Yes. तो ये आंसर हो ही नहीं सकता. अब आते हैं सी और डी पे. यस, ये कैसे करेंगे इज व्हाट यू हैव टू टेल मी. तो यहां पे चारुल, आई यूज योर मेथड. जब डिस्प्लेसमेंट 2 यूनिट है तो फोर्स आधे यूनिट का लगेगा. यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट 2 यूनिट है, कितना फोर्स लगा दिया हमने? 2 का. तो ये तो गलत है. वहां पे लिखा है फॉर 2 यूनिट 2 सेंटीमीटर ऑफ डिस्प्लेसमेंट फोर्स इज हाफ. आंसर इज डी.
बोलो, am I making sense? ये मेथड समझ में आया? एलिमिनेशन एंड पुटिंग वैल्यूज वाला. Yes, sir. सर मुझे ये क्वेश्चन समझा, बट आपने जब बी को एलिमिनेट किया तो उसका रीजन नहीं समझा. आई थॉट कि वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहा है, इसीलिए नहीं. Okay, what is x? Charul, Nidini, what is x? Displacement. Normal spring है, उसको कितना displace किया is x, right? Now, if you look at this dot that I have created, one big dot, at this point, what is the displacement? X का value देखो. What is the value of x at this point? 0. So there is no displacement. If there is no displacement, how come you are applying 2 Newton force to bring it back to its original place? It's already its original place. So if x is 0, then there is no force required. So the line must pass through origin. X is 0, y is also 0. Is it clear? Yes, sir. Yes. Now, would you guys want to do a problem on your own? Last problem करते हैं before we call this class off. I want you to solve question number 8, challenge problem. और ये बायोलॉजी का क्वेश्चन नहीं है, वो नाम वाम वैसे दिए हुए हैं. चलो करो. On your own, send me your answers. Okay, Nindini, hold, देखते हैं. Question says, which of the following graph represents the relationship between length h in feet and days d for an air potato plant that is initially 4 feet long and growing at a rate of 8 inches per day? Inches or feet, ऐसे कुछ units चल रहे हैं. How many inches are there in a feet, guys? How many inches in a feet? What's your height, Charul Kumawat? Yes, sir. What's your height? So 5.4 something. 5.4 kilogram. Right. So 5.4 what? 5.4 what? Feet. और ये 0.4 क्या है? Inches. तो 5 feet 4 inches height है आपकी. Yeah, 5.6. हाँ चलो, तो 5 feet 6 inches height है आपकी, right? How many inches in a feet? 10. ये गेस है ना, ये गेस वर्क कर रहे हो ना यहाँ क्लास में बैठ के. किसी को भी नहीं पता है ये कितने कितने इंचेस होते हैं एक फीट में. हाइट तो बता देते हो अपनी, बट नहीं पता है. 12 inches per feet. ध्यान रखना, there are 12 inches in a feet. तो अब ये वाले क्वेश्चन पे आते हैं. Let's announce your option. Tithi, you go first. So C. Option C. C as in Calcutta. बोलो चारुल. Yes, sir. C. C as in चारुल. निधिनी बोलो. P. So अलग अलग आंसर्स आ गए. Let's go ahead. अभी करते हैं इसका एनालिसिस.
मैं इसको पढ़ता हूँ आप लोगों के लिए. एयर पोटैटो आर इन्वेसिव प्लांट्स दैट कैन किल अदर प्लांट्स बाय ग्रोइंग ओवर देम एंड स्मॉदरिंग देम. एयर पोटैटोज कैन ग्रो अप टू 8 inches a day and reach length of up to 70 feet. These are the following graph represent. तो मतलब जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे लेंथ बढ़ेगा. For sure, which option can never be the answer? Correct. All of us agree. क्योंकि ये तो पॉजिटिव रिलेशनशिप है, ये तो नेगेटिव स्लोप वाला लाइन है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता. आगे बढ़ते हैं. It grows 8 inches in a day, reaches full length of 70 feet. Perfect. And it takes D days. Initially, it is 4 feet long. ये वाला जो डेटा है ना, इससे कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट होता है? Initially, it is 4 feet long. नींद नहीं, देखो आपने कैसे निकाला बी. इनिशियली ये तो 10 पे ना, 4 feet long का इनिशियली स्टडी के स्टार्ट में. तो या तो आंसर सी है या डी है, क्योंकि डी में हम देख के विजुअली नहीं बता सकते कि वो एक्चुअली 4 feet है या 0 feet है. बट बी तो आंसर नहीं है. निधिनी, डू यू एग्री? मुझे पहले लगा था सी होगा, बट इन द क्वेश्चन इट इज मेंशन दैट इट इज रीचिंग अप टू लेंथ ऑफ 70, तो दैट इज ओनली हैपनिंग इन केस ऑफ ऑप्शन बी. हाउ डू यू नो कि 90 डेज के आगे स्टडी नहीं हुआ है? निधिनी, उसमें लिखा है क्या 90 डेज का ही स्टडी है? नहीं, मतलब इवेंचुअली जो ऑप्शन सी का ग्राफ, अगर आप इसको एक्सट्रापोलेट करोगे, इफ यू एक्सट्रापोलेट दिस, after 90 days at some point of time it will reach its height of maximum height of 70 feet. okay, Right? yeah. So अब why between C and D कैसे चूज करना is my question. अगर आप मुझे ये समझा सकें, between C and D how do I choose which one is the correct one? ये कैसे किया आप दोनों ने? चारुल, तिथि, how have you done this? Sorry? So we know that there's a growth rate of 8 inches per day. Correct. You can't see that in the graph of day. Okay, so I'll put it in a better way. You're right. So what happens is, देखो 8 inches per day, अगर आप देखोगे तो ये 3/4 feet होता है. 8 inches मतलब 3/4 feet. कैसे चारुल? 8 divided by 12. 3/4 feet. अगर ये 3/4 feet में देखूंगा यहाँ पे, if I do 3/4 into 10 करते हैं, चलो 3/4 into 10 मतलब 10 days में ये मैक्सिमम 7.5 feet बढ़ेगा. इनिशियली कितना है? 4 feet. तो 10 days में कितना हो जाएगा? 4 plus 7.5. लेट्स अप्रोक्सीमेटली 12 feet होगा इसका टोटल हाइट. बोलो गर्ल्स. Yes, sir. Yes. ऑप्शन डी में देखो, 10 days में वो 70 feet पे पहुंच गया. हाउ इज दिस पॉसिबल? 10 days में 12 feet से ज्यादा हो ही नहीं सकता. यहाँ पे आ गया है वो. ये तो आंसर हो ही नहीं सकता. आंसर यही बचा है, ऑप्शन सी. ओके, Yes, sir. so this is where we come to end of this class, and I'll make myself spotlight so that I can talk to you guys for some time. So this is chapter 2. जो question हमारे रह गए हैं are some similar kind of problems which you must do on your own in classwork and challenge problem. You must come back to me with any doubts you have. I plan to meet you guys in person at Kharghar branch on 10th December Saturday को for English session. But class के पहले या class के बाद में I am available in case you have any doubts from problems that you would do from the math section. Okay? So that's all from my side. Thank you. Tithi, you should wait. I'll take 15 minutes to give you a small orientation on how this program will proceed. Charul and Nidhini, when I meet you on 10th December, new digital SAT के फॉर्मेट पे हम लोग तब डिस्कस करेंगे. सर मुझे एक डाउट था, स्कॉलस्टिक नहीं था, मतलब एक आपने बोला ना कि मतलब खान एकेडमी में अकाउंट बनाओ, so what is it for and क्या उसे करना है? khanacademy.org करके वेबसाइट है. आप उस पर जाओगे, अपना स्टूडेंट लॉगिन से एक अकाउंट बनाओगे, ईमेल आईडी पासवर्ड सेट करके. उसके बाद आपको उसमें डिजिटल एसएटी के लिए मैथ्स का एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स खुल जाते हैं.
तो आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस वहां पे और क्वेश्चंस का कर सकते हो, नंबर 1। नंबर 2, ये जो भी डिजिटल एसएटी हो रहा है ये एक ऐप के थ्रू हो रहा है विच इज कॉल्ड ब्लू लिंक। तुम लोग एक काम करो,